Hello, hello. I wasn't really sure if I wanted to come live and discuss what's going on with Trump and the newly released emails and the fallout from it. Probably because the world at large is talking about it anyway. But I think what's left me a bit cold and horrified to a certain extent is the fact that people have sat on these so-called files and just let things unravel at the expense of people losing their lives, namely Epstein's victims. And I've been a fan of the podcast by Joanna Cole. And I've been watching it for a long time now. Sort of independent journalism away from the mainstream media. Because we all know how reliable the mainstream media is. But what has left me incensed is this so-called access journalism. I can't help but think that these so-called access journalists, and I know if I start naming names, I think it will take just a matter of it don't take a matter of hours, not even a whole day, for my channel to be wiped off the face of this earth. But I'm still going to say what I want to say, because there are ethics or principles that are set for these journalists, and they can call themselves mainstream journalists, access journalists, or as our not so dear friend Mr. Yaxley calls it, citizen journalism. Although I will say, in his defence, he's, in view of, I'm no fan of his ideology, but he has still behaved honourably in terms of protecting his sources, but more importantly, protecting the vulnerable girls that had given him testimonies, if you like. Because one of the key things is, especially with this so-called access journalism, is as part of their principles, they're supposed to minimise harm. So it's a balancing act in
providing people, or the public if you like, the information that the public crave. And it is craving for information rather than really wanting justice for any victim, whether they be for Epstein or whether they be for these grooming gangs that we had here. You know, and it's a real fine balancing act, I'd say, that they need to protect the vulnerable and not put them at risk. But I can't help but think that if Wolf was sat on that information and he was privy, why wait now? Does everything have to wait because they want to put it into a book and then earn millions? Or they want it to come on top and then say, well, actually I knew this was going to happen because I had this information. I knew about the emails. Because it was insider information. Because it's a bit like Joanna says, he really is in old Trumpy Bumpy's head. You know, it's potentially the end of the road for Trump, and I know Miss Maxwell. Again, just for our own potential release or to get into more comfortable, cushy environment in terms of prison. She said whatever she needed to say to ensure that she could end up on Trump's save list, but it's a mess. Doesn't matter how you look at it, it's a mess because the one lady that brought it to a head, you know, she took her own life, and that's a big thing. And could it have been prevented? Yeah, I think it could have, especially in light of what's come out now. But the thing is, our world is run by rogues who lie, and they're power hungry, and they lie. I mean, there's lies and then there's lies, but yeah, and that's why my mind keeps going back to that lady taking her own life in April. It's not fair, you know. And then we've got we've got our guy here who's probably curled up in his big fancy bed in his big fancy home in Windsor, which will be taken off him, Royal Lodge. And he's crying because he has to now move to somewhere in Norfolk on a royal estate and will be funded by his older brother, Gunnar Charlie. Yeah, I feel bad for his daughters, but what to do? Such is life. And their world's a bit weird. It's nothing like our world. You know. Good morning, Whoopie. Sasrika. Very good morning to you. Ki halat thada? Mericha ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਆ ਇੱਥੇ 1:30 ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤਾਂ
मैं ਉਹ ਪਾਗਲ ਅੰਗਰ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਰੇਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ but yeah ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਨ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਈਫ में ਪਾਠ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਾਠ ਲਾ ਲਓ। ਅਮ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਕਰਨੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਅ, ਇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਨਾ। Bye Boopy ਜੀ, have a lovely day. Have a good day too. ਹਾਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2025 is the year ਦੇਖੋ let's see what happens ਪਰ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਲਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਗਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਬੋਲਣ but yeah I thought I'd have a lot to say, and I have. And for once, it's not even jumbled up in my head. And for once, I'm thinking straight. Um, I'm not even tired. Yes, I'm restless, but that's more about being emotionally restless rather than physically restless. Um, because, like, we all have our trigger points. And I'm not triggered as such, but yeah, I can't help but feel that there are so many people who have sat on this crucial information that if they handed it in earlier, lives could have been saved. But then I don't suppose that's how it was meant to be. But it is what it is, isn't it? We can think about it and we can feel bad, but the fact is, can't actually change anything. I wish we could, but we can't. I just think human behaviour. Oh dear. Human behaviour has almost got to a point of no return. And yet we're given opportunities every day to check in on ourselves. But we don't. For whatever reason, we don't, because, we're driven by egos. Sometimes we're driven by absolute ignorance. Sometimes we're driven by the need to win
and to win at all costs. Sometimes we're driven by this overwhelming need to have the last word, or for people who are quite vengeful, they're driven by, again, a need to, they have to have their last swan song. It never really ends well, does it? Um, I'm a massive believer in accept the apology that you're never ever going to get. And in cases where we've messed up, then apologize and be done with it. Then it's up to the person to either accept it. I mean, apologize genuinely, not like just apologize for the sake of apologizing, but apologize genuinely. And then it's up to them to accept it or not. Because what you can't do is force an apology on someone. Because the one thing I've noticed on YouTube is that there is so much fakery. So much fakery. And people, all these allies and allegiances and this groupism that people seem to fall into, they do it with people that they don't necessarily like, but they do it because they feel they have a person in common that they all dislike. So, and that's never ended well for anyone anyway. And people who do that, that really does show who they are. But again, this is something on YouTube that we're never going to be able to stop. All you can do is make sure that you keep yourself on the right side of your lane, really, because people will chop and change lanes as per their convenience, or unfortunately it's not always convenient either, but that changing lane does satisfy their ego to a degree. So, like I said, midnight musings. Bobby's sweet. She's always one of the first ones who'll come and say hello. I think I'm on one of those weird, what's the word I'm looking for? Yeah, it's been a weird day because, well, I say it's a weird day, it's a weird week. It's literally been births, deaths, and marriages. And that's the circle of life. So, I will say one thing, though. What I have noticed is that when someone falls out with the other person, right? What people tend to do is consciously try, and then isolate that one person,
and go into this whole groupism shenanigans to then have them targeted. And that is tantamount to bullying. Which is really, I mean, it's unsavoury at the best of times, but I always think then of the person that they've isolated or they're trying to isolate, and then, with a plan to bully. I'm going to sound like a bit of a parrot, and I've said this before, and I'll say it again. Then I don't really give a flying duck whether that person is a nemesis, was a nemesis, or could potentially in the future become a nemesis. I, for one, will go and stand with anyone who is deliberately being targeted and isolated, because it's just, it's ugly. It gets really, really ugly. And sometimes you've got to put your own beef aside. And I don't mean beef literally. You've got to put your own feelings aside and think about your own situation rationally as to why they were a nemesis, are a nemesis, or could potentially be a nemesis. But is that more important than actually going and, to a certain extent, becoming a shield? And that's not saying we go all heroic. No. All it means is that we're potentially saving someone's feelings from being hurt further, because ultimately we don't really know what that person's going through in real life. I'm not talking about YouTube. Obviously, we all know what people are going through on YouTube, but in real life. So if the cap fits, whoever will listen, or is there anyone listening? I'm not even looking at the screen. If anyone thinks that they can single out a person because they are running solo, and hats off to people who run solo, and I'm not for a second saying that people who run solo will ever fall weak. However, what I'm saying is you've got to recognize them as human beings. And if you know they're sensitive, then you know what? People like me will step in, whether we're welcome or not. It's a horrible mindset to have, to be vengeful, to plot and plan and publicly demean and degrade. It's a horrible, horrible mindset. And I don't know if it's for notoriety. I don't know why people do it. I don't know what joining hands with known enemies or people with the opposite ideology, or the opposition party, if we like, and it becomes all too political. But there's zero compassion for people. We've sat with them, and if after a few weeks and months you don't get to know them even slightly, then ask yourself, what the hell are you doing as a human being? And this probably sounds a bit lectury, but you know what? I don't care.
I think most people know I don't really give a shit um, about what people say about me, unless they get a bit too personal, and then I'll probably go for the jugular if it's really too personal. But yeah, this whole thing about bullying and then aligning with people who are vile just because it adds strength to whatever battle you think that you're going to go into. Ridiculous. Absolutely ridiculous. We'll gain nothing, we'll lose everything. So yeah, I've said it in a roundabout way, and I think समझदार को इशारा काफ़ी होता है. तो if anyone was thinking I'm going to come on and discuss that idiot, I'm not. She's not worth my time. She's At the moment, she's the furthest thing from my mind. But yes, unfortunately, I think their plan is to attack someone who they feel they've isolated. And I'll tell you now, I won't stand by and let that happen. And that's just that's on humanitarian grounds more than anything. You just don't, it's like their morals have, well, I say morals, a bloody moral compass, God knows which direction it's heading in. But this is my way. It is absolutely pegging it down out there. So we're in the middle of some storm called Claudia, I think they've called it. I don't know who or which country decided to call it Claudia this time, but they have. And it means we're just going to have inches and inches and inches of rain, and there's going to be so if I could be bothered to put my glasses on again, I put them down basically when Bubby went. I'd be able to see how many people are listening. But if you are listening, say hello. I don't bite. Unlike Trump, the dog that doesn't bark. God, those emails were, you can't even laugh at them because, we know what he's done, we know what he was part of. But I don't know if I'm hoping people from across the pond are listening, and no doubt they would have looked at the news, and I'm not talking mainstream news, certainly not the BBC, because Trumpy Bumpy wants to sue the BBC. He's an absolute grade A arsehole, isn't he? But there's lots of independent news outlets who have, they're splashing these emails all over the place, and these people, these are, I'm loath to use the word educated because that doesn't always guarantee decency, and it doesn't always guarantee common sense. You could be surrounded with people who are extremely educated, but that doesn't guarantee maturity, and it doesn't guarantee common sense. But if you look at the email exchanges, they're juvenile, depraved, pathetic, schoolboyish.
and we've got one of those. Have, having said that, having said that, Trumpy Bumpy doesn't email. He actually doesn't email. In fact, I think he's a bit of a technophobe, or he might just be so clever that he's avoided it, knowing that he doesn't want to leave a digital footprint, and the rest can all, whatever they find out against him, it'll just be circumstantial. Yeah, but apparently he has a little girl following him around with these one of these Wi-Fi little printers who prints off articles for him all day, just telling him what's going on and to massage his ego with good articles about him. But yeah, that's a bit of hearsay. I don't know. But yeah, but the others, I mean, yeah, juvenile. And these guys were apparently, you know, people in power. So I'm jumping here, there, and everywhere. Like I said, midnight musings. I'm not really going to make sense. I was going to say I should really be careful about what I say about Bumpy, but I don't care. His time's up anyway. His time is definitely up. He actually came to power on the back of social media, and I was I was listening to this podcast. He's actually a comedian, but the podcast is, I think it's called Flagrant or Fragrant or something like that. So he's taken credit for him. He's also taken credit for oh God, I keep forgetting his name. Mira Naira's son, Zoham I can't say his surname. Yeah, he's taken the credit for that as well. And again, you know, I'm not going to pull any punches. The guy has he's got to where he has because he had, I mean, he used social media to its best potential. But the proof will be in the pudding. You know, everyone can play this social media game, but he's really got to put his money where his mouth is now. And you can see, you know, the Indian outlets, news outlets, raving about, you know, there's an Indian mayor, there's an Indian mayor. Well, you know, there's an Indian second lady as well, Usha. But we won't talk about her husband because he's a prick. So, yeah, there's nothing more I want to say apart from, and this isn't a veiled message, I'm saying it direct, that if anybody feels that they can isolate someone who they feel is running solo, then think again. And hats off to her, more power to her if she runs solo. But if you think people will just sit back and allow the trolling and the bullying and the vile crap and anything else that you might be planning and plotting, then think again. Because the one thing we should have learned by now is, regardless of what the situation, as a community, if we do stick together, whether someone likes us or whether we like them or don't like them or we're indifferent, as a community, right, we cannot just stand back and allow it. So, for example, God forbid, if there was a riot in our village or our little town or city, wherever we are, or if we were out in public and
we witnessed someone being attacked, whether it was verbally or physically, we wouldn't just stand there and allow it to happen. Even if it was someone that maybe we've crossed words with in the past, we wouldn't just stand there. You'd either try and break it up or you would seek assistance, from law enforcement. But we just wouldn't allow this whole mob rule to attack someone because you don't agree with their views. So I'm just putting it out there, people. I'm just putting it out there. You know, again, this is going to sound repetitive. If you fall out with someone and you can't resolve it, walk away, go quiet, or, have it out with them. And everyone's different. I recognise that. Some people shout and scream at each other, get it off their chest, give each other some breathing space, even tried to understand where it went tits up. And when I mean where it went tits up, I mean what happened, what was the root cause of the falling out. And if you still disagree, just agree to disagree, right? And then just leave each other alone. That's it. Draw a line under it. It's done. Egos. That's what this comes down to, egos. It's not a battle of ideologies, and it's not you know, it, this is what they normally say is pride before a fall. Okay. Now, again, I almost feel like I'm going into lecture mode, and I don't really want to lecture. Yeah, just leave each other alone. And unsolicited advice, I don't care if someone takes it or if they don't. But what we can't have is a situation where it gets so out of control that we then end up behaving in a way that, how can I put this? Behaving in a way that there's just no coming back from it, that no one will ever be able to come back to balance, and people will get hurt. And then there are people who are getting political, and I mean really political, who don't even understand politics. And they'll bring religion into it, and they'll bring caste and creed into it. Oh, please stop, you fools. Just please stop. Because unless you've got a good understanding, right, of what you're talking about, when you replay your life, you will then realise exactly how silly you sound. And if YouTube is your thing, and you really want to make your presence felt on YouTube, or if you want to make a livelihood from it, which is all good, it's well and good, for people who do want to make money from YouTube, great. We're no one to judge. That's fine. Make your money. But do it in a way that it's fruitful, joyful. Yeah, people will fall out now and then, and that happens. But do you really have to go to the extent that you go to? No, not really. Not really. Because those earnings will just cease. If you're a channel that's growing, y- you need to ensure
that you attract the type of audience that will then grow with you and stay with you. Just going sleeping with the enemy just doesn't work. Has anyone seen that film, Sleeping with the Enemy? And then there was a really bad Indian remake of it. That was appalling. But, going back to the media, mainstream media, I'll tell you something that, I mean, if it comes into my feed, I always put it in not recommend, but mainstream media all over the world is bad. And we know that, right? A lot of fake news and they're in the pockets of their governments and politicians. We know that. But it's this celebrity paparazzi culture. Sometimes you put on YouTube and something will come into my feed that is showing like funerals of celebrities and they're close up on people who's coming and going. Oh my God, it is just got to be the most distasteful thing. And they don't. Indian apps have no boundaries. They literally have no respect. That's horrible. And yeah, of course, these idiots, they also they put out a lot of fake news about the actor Dharminder, didn't they? That was really bad. And I tell you what, I did see something come into my feed was his son, the older one, Sonny. He used some abusive language for them and they deserved it. They absolutely did deserve it. But this is again, they do it for YouTube, these paps, because there are that many platforms that use this platform. So when I say platforms, media outlets that also use YouTube. And it's horrible. It's really bad. And then you get these idiot podcasters who keep bringing on these astrologers who do these sort of weird deep dives into these celebs. What is it with this fascination with celeb culture? I just, yeah, and maybe I'm just sounding old and grumpy, but there's that, and that's why I couldn't get into Big Brother this year. No, not Big Brother, Big Boss. In India, it's called Big Boss. Because apart from that lady who was doing the cooking initially, what was her name? Begins with K, Kanika or something like that. Good morning, Nindi. आप अच्छा मजाक क्या? Good morning, Mamta. आप Good morning, Ninja. मैं मुझे ऐनक उठानी पड़ेगी. कैसे हो आप, ममता? ये मुझे right, I can see. एक तो ये साइन आता है ना बीच में एंड पर on the right hand side वो मजाक I can good morning निंजी आप अच्छा मजाक उड़ा लेती हैं मैं ठीक हूँ मजाक मैं अच्छा है आप ठीक पूजा हो गई चेक करनी है मैं एक बात बताऊं ममता आपको मजाक नहीं होता ये पता अगर सीरियस बात करनी है तो मैं लिंक दे देती हूँ लेकिन सुबह-सुबह कोई तल्ख़ बात नहीं होगी क्योंकि आज तो आपकी तो सुबह हो गई है ना? मेरा तो न सुबह नहीं मेरी तो रात है। अच्छा, छुट्टी है आज। आपका फ्राइडे, हमारा फ्राइडे हाँ, मेरा तो दिन
का इतना पता नहीं चलता क्योंकि इस वीक मैंने इतना काम किया नहीं ना। तो नॉर्मली जब मैं मंडे टू फ्राइडे काम करती हूँ ना, मुझे दिनों का पता चल जाता है, लेकिन इट्स फ्राइडे टुमारो। हाँ, मुझे आपसे कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है फिर। अम, आप भी देखो, ऊपर आना है तो मैं लिंक दे देती हूँ। अगर आपने अपना पूजा कर ली हो या कुछ जो भी आप करते हो, बूपी भी आई थी और आज 14 नंबर है, नवंबर। अच्छा, हाँ। नहीं, तारीख का तो मुझे पता था, क्योंकि आज मेरी हमारे था कोई इवेंट था हमारा। देखिए, मुझे दिनों का नहीं ममता पता चलता, मतलब कि मंडे कब हुआ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि जब मेरे जैसे लोग काम रेगुलर काम छोड़ देते हैं ना, तो फिर क्या मंडे तो क्या संडे, सेम सेम सा ही हो जाता है। अम, अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो ऊपर, बता दो तो मैं लिंक ढूँढ कर मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो अच्छा है, मुझे भी आपसे कोई टेंशन नहीं है। मुझे मैं सीधा-सीधा बोलती हूँ, ममता। लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? जब 2 लोगों के बीच आज हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। ओह! दैट्स रियली गुड। मैंने उनके बारे में पढ़ा है काफ़ी। अम, सो अच्छा, कैसे आप बताओ, आप कैसे मनाएँगे तो? ये भी एक टॉपिक हो सकता है आपके लिए, है ना? वो उन उनकी हिस्ट्री के बारे में आप अगर बता सकते हो जब आप लाइव करोगे, है ना? बच्चों के साथ, हाँ, दैट्स गुड। हाँ, हाँ, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो बहुत खुशी से सुनूँगी अगर जब भी आप लाइव आओ और उनकी बात करो, क्योंकि फिर मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है ना? अब लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे कि इसको जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूरी तरह नहीं पता। नहीं, हिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन कब की? आई मीन बहुत साल पहले। मैंने पता क्या कौन-सी फ़िल्म शुरू की थी? अम, किस दिन थी? वीकेंड ही होगा आई थिंक। तो मैंने इमरजेंसी फ़िल्म शुरू की थी देखनी। तो वो ही होता है मेरे साथ तो कि लगा ली, 10 मिनट देखी, तो फिर आँख लग गई मेरी। लेकिन मैं देखूँगी वो, और फिर पता क्या होगा? लोग कहेंगे, "ये कंगना रनौत की फ़िल्म देख रही है, कंगना रनौत ऐसी है, वैसी है।" मुझे उसके पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एज़ एन एक्ट्रेस वो अच्छा काम कर लेती है, तो मैं देखूँगी। मैंने कुछ और भी ऐसा कुछ देखा था। उनके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन भी हिस्ट्री से हाँ, एक तो ये जो ना मुझे नहीं पता ये स्ट्रीम यार्ड का क्या बदल गया ममता, लेकिन ये राइट साइड पर एक डॉलर सा साइन आता है, वो आधी बात जो लिखी होती है ना, वो खा जाता है डॉलर। ममता, आपके यहाँ अब ठंडी हो गई है कि नहीं? यहाँ तो हमारे तूफ़ानी तूफ़ानी रात, बारिश और ठंड।
अब 6 जने देख रहे हैं, वेलकम 6 जनों को, जो भी है। अ, अच्छा मैं अब पढ़ सकती हूँ। उनके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, मैं भी हिस्ट्री से आज एक लास्ट लाइव होगी जो लोग मेरी ईमानदारी पर सवाल किए उनको जवाब देना है। इधर शुरू हो रही है ठंडी, हाँ। नहीं मेरा ख़्याल पता क्या है ममता? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगी, तो फिर आप प्लीज़ मुझे अम, बताना क्योंकि मुझे थोड़े हफ़्ते ही हुए हैं आपको देखते हुए या जानते हुए क्योंकि आप मेरे कमेंट करते हो, है ना? तो फिर उस दिन मैं ब्लेस की लाइव में गई थी और आप भी वहाँ थे, है ना? तो मैं आपको सच्ची-सच्ची पूछूँगी, आप नहीं, मैं आपको पूछूँगी, आप सच्ची-सच्ची बताना मुझे। आपको कितनी देर हुई है व्हाइट टी पे? मैं सर्दियों में पता क्या करती हूँ, हमारे वैसे तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम चलती है, लेकिन मुझे उससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मेरे पापा की और मेरे ताया जी की अ, लोई है मेरे पास, वो बड़ी-सी चादर नहीं होती, जो आदमी लोग लेते हैं। मैं 1 साल अपने पापा जी की निकाल कर ओढ़ लेती हूँ, फिर उसको ड्राई क्लीन करके पैक करके रखती हूँ। दूसरे साल मेरे ताया जी की, वो निकाल कर वो ओढ़ लेती हूँ। मैं ऐसे कितने साल हो गए अब मुझे ताया जी की लोई मेरे पास है 1995 से। दौर डिफेंड द ट्रूथ। हम सिस आप एक्स मुस्लिम हो? नहीं जी। मैं वाईटी पर बहुत टाइम से हूँ बट पैनल ब्लेस का जॉइन किया था वो भी सिर्फ देश की वजह से। अच्छी बात है, ठीक है। सिर्फ देश की वजह से, अच्छी बात है। तो मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताती हूँ, जो भी हुआ मुझे नहीं पता और ना मैं पूछूँगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना? आप अगर नहीं आप दोनों का रिज़ॉल्व होता, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी होता, चलो ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ किसी भी गलत हाथों में मत पड़ना क्योंकि लोगों को पता क्या चाहिए होता है? अगर 2 लोग लड़ते हैं, लोग एन्जॉय करेंगे, वो आपको ये सलाह नहीं देंगे कि सुलझा लो या चलो हो गया छोड़ दो, कभी तो इकट्ठे बैठे थे, है ना? क्योंकि हमारा क्या होता है ना मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से क्योंकि ये हुआ है मेरे साथ और मैंने भी यही सोचा कि नहीं मैं तो जवाब दूँगी, आपने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, वो भी शायद ऐसे ही सोचती होगी, है ना? तो लोग फिर क्या करते हैं दे कम एंड आग लगाते हैं। आग कैसे? मतलब वो जो गुस्सा होता है ना 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते वो हम शांत हो जाते हैं, है ना? दूसरी बात मैंने बहुत नोटिस किया और मैंने विम्मी को बहुत बारी ये कहा, मैं विम्मी का नाम ले सकती हूँ कि क्योंकि मैं विम्मी को शुरू से जानती हूँ, ठीक है? तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि हर बात आपको जस्टिफ़ाई करनी है और सफाई देनी है। आप ईमानदार हो
आपको पता है, आप क्यों जवाब दोगे किसी को कि देखो ये प्रूफ है, ये जस्टिफिकेशन है कि मैं ईमानदार हूँ, है ना? और अपना पीस ऑफ माइंड भी मत खोना। देखो, ये नहीं है ये हमारा पंगा नहीं हुआ था ब्लेस्ड के साथ। मैं तो खुल के चलो आप आए हो तो मैं माज़रत के साथ किस मज़हब से ताल्लुक है? मेरा तो भगवान से ताल्लुक है। आप आप उर्दू बोल रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू अस्यूम दैट यू आर मुस्लिम। मैं हर मज़हब की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं मज़हब की बात तो यहाँ नहीं करूँगी। मेरा मज़हब, मेरा रब एंड ह्यूमैनिटी। तो मैं क्या कह रही थी? अम, हाँ, सो ये नहीं कि ब्लेस के साथ हमारा नहीं हुआ या मेरा नहीं हुआ, लेकिन आई chose to not react, है ना? क्यों? और ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, आई डोंट रिएक्ट अनलेस एंड अनटिल कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाता है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बचा लेती है गुस्सा करने से, मैं सुनती नहीं, मैं सुनती नहीं। तो फिर टाइम पड़ता है, फिर गुस्सा ठंडा होता है, फिर आप सोचते हो, समझते हो, कभी-कभी आपको कोई बता देगा कि फलाने पैनल पर ये हुआ, उसने आपके लिए ये कहा एंड अनटिल एंड अनलेस इट्स वेरी पर्सनल, मैं रिएक्ट नहीं करती एंड आंटी उसको भी बैक पैनल बोलना चाहिए। देखो ममता, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको देती हूँ, ठीक है? प्लेस के बारे में। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन हुई है, शी इज़ सेंसिटिव एंड शी इज़ वोलेटाइल। रिएक्शन उनका इंस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंट, ठीक है? लेकिन मैं एक बात आपको और बता देती हूँ। अगेन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है एंड आई एम एंटाइटल्ड टू इट। उसको अगर जेन्युइनली उसको आप अच्छे से बोलते हैं, क्योंकि देखो जिस दिन मुझे पता लगा कि वो रो रही थी, ठीक है? उससे पहले उन्होंने पता नहीं क्या मेरे बारे कहा या कि मैं आई डोंट नो, चलो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं नहीं रिपीट करूँगी, है ना? लेकिन मुझे पता चला कि आपकी बात हुई है, फिर वो रो पड़ी है, राइट? मेबी ये मेरा वीक पॉइंट नहीं, लेकिन मेरा होता है कि अगर कोई इफ आई हैव मेड समवन क्राई, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर क्राइंग, कि क्यों वो रो रहे हैं, है ना? और वो सच में वो रो रही थी और उससे पहले मुझ पर गुस्सा भी हो रही थी। मैं चढ़ी हूँ पैनल पर और उस लड़की ने बहुत रिस्पेक्ट से बात की। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये भी है, फिर मैं आपको एक और बात भी बता देती हूँ कि मैंने पीछे जाके थोड़ी और भी रैंडमली उसकी लाइव्स मैंने सुनी रैंडमली। 10 मिनट यहाँ, 15 मिनट्स ये वहाँ, 20 मिनट्स वहाँ, है ना? तो अम, मैंने वो एक बात मैंने नोटिस की। वन, वो रो रही थी, है ना? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई भी रोए एंड दूजा, उसे ना कोई भी प्यार से बात करे, लाइक जेन्युइन प्यार से, ये इस मकसद से नहीं
कि ये जो पॉलिटिकल गेम्स चलती हैं, इस मकसद से नहीं। तो वो लड़की बहुत जल्दी वो हो जाती है लाइक पिघल जाती है ना? मैं भी तोतली के खिलाफ ही कमेंट किया था जिस पर मैडम को बुरा लगा और मेरे लिए एक गंदा कमेंट हो रहा था उसको मैं नहीं की रही थी। चलो ठीक है। तो ये आपकी और उनकी बात है ना? यही बात अगर आप बैक पैनल नहीं जो भी आपका अम, कम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे भी आप करते थे, मैं फिर कहूँगी प्लीज़ कर लो। अगर दोस्ती होती है वेरी गुड, अगर दोस्ती नहीं होती ना, आप फिर एट लीस्ट आप कह लो, वो कह लो एंड देन फिनिश इट। लेकिन गलत हाथों में पड़कर आप ना अम, मैं साफ-साफ बोलूँगी कि इस आपका कुछ अच्छा नहीं होने वाला क्योंकि मैं कैसे कहूँ यार द द ट्रूथ जी आप यहाँ बात करने आई या मज़हब पता करने अभी एक माँ से बेटी करे है जाति धर्म चलो इग्नोर करो कोई बात नहीं। उ आ गया होगा लाइव ना उनके सामने, कोई बात नहीं। हाँ, तो अगर मैं माँ बनकर आप से कहूँ, देखो मैंने आपको कहा था आप पोस्ट डिलीट कर दो, आपने मेरा मान रखा और आपने डिलीट कर दिया। आपने फिर ये कहा कि मैंने तो पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर बात की। लेकिन आपने ये नहीं देखा और हालाँकि मैंने आपको जवाब दिया था कि जब उन्होंने थोड़ी-सी भी बात की, मैंने तुरंत अ, उनको लिखा था कि बस ठीक है, हो गया ना। उस लड़की ने दोबारा बात नहीं की, है ना? तो ये आप भी शांत हो जाओ, वो भी शांत हो जाएगी। अगर दोस्ती दोबारा होती है, बहुत अच्छा है। अम, वरना लोग फ़ायदा उठाएँगे, ठीक है? और फिर नहीं अच्छा होगा आपके लिए ममता, नहीं। और आप चैनल चलाते हो, अगर आपको चलाना है ना चैनल, तो आप चलाओ और जिससे भी बात करनी है मुझे तो ये भी नहीं पता था, मैं आपको सच बता रही हूँ। मुझे ये नहीं क्योंकि मैं सच्ची बहस का लाइव मैं सुनती नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि आप अंकुश सपोर्टर हो। लेकिन दैट्स फाइन आप जिसको भी सपोर्ट करते हो आप करो, है ना? क्योंकि एवरीवन हर एक बंदे को हक है। मुझे नहीं था पता, यू नो आप म मेरे आई डोंट नो लाइव्स पे या जहाँ भी आप अच्छे से कमेंट करते थे और मुझे अच्छा लगता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप मुझे नहीं था पता कि आपने भी मेरे लिए अम, कभी ना कभी कुछ कहा होगा और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये पता क्या है? ये लोग फिर आपको बाद में बताते हैं कि और आंटी ये बात मैंने ब्लेस के यहाँ आने से पहले ही क्लियर करके आई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं फिर कहूँगी, देखो आप अपने ठहरो, ये क्या कह रहे हैं? बहन जी अपने तो एक बात पर दिल जीत लिया कि मैं हर मज़हब रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी मैं हिंदी नहीं आती। हिंदी, उर्दू सेम ही है भाई। कुछ इंडिया के खिलाफ मत बोलना, मैं बाकी तो सब ठीक है। ये नहीं कि आप पाकिस्तान से हो, तो आप यहाँ अलाउड नहीं, ऑफ़ कोर्स अलाउड है। मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं। अम, वो मुझ पर जान छिड़कती हैं और मैं भी। हाँ, अम, लेकिन ठीक है। उ आपकी उर्दू ठीक है। ना आंटी मैंने आपको कभी कुछ नहीं बोला, ब्लेस ने भी
बोला पर मैं कब वो छोड़ो, उसने बोला ठीक है, मैं उसको समझ गई हूँ, है ना? और जब आप किसी इंसान को समझ जाते हो और वो भी विदाउट वन टू वन कॉन्टैक्ट, है ना? क्योंकि सिवाय रिचा के मैं किसी से ऐसे बात नहीं करती रानी से ज़्यादा बात जब मुझे मेरी आर्यन से होती है ना? मैं ऐसे वन टू वन मैं बात नहीं करती, लेकिन अगर आपको किसी को समझना है ना, तो आप समझ सकते हो। तो कोई बात नहीं, अगर कर भी दी होगी इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? मैं ऐसे ग्रजेस नहीं पालती। सो आप प्लीज़ ऐसे ऐसे ना कुछ सोचो, ना करो। लेकिन ये मेरी बात मान लो कि उन्होंने आपके लिए वो तभी रुक गई थी, ठीक है? और उन्होंने फिर ये भी कहा कि उन्होंने 2-3 नाम लिए थे। वो जिन्हों के नाम लिए थे, आप देखो वो मेरी पुरानी दोस्तें निकली, पुरानी दोस्तें। जो एक को तो मैंने पता नहीं 2-3 साल से देखा ही नहीं था, है ना? तो अगर ऐसी लड़कियाँ वहाँ जाती हैं, तो फिर ब्लेस भी इवॉल्व होके अपने चैनल को अच्छे दूसरे डायरेक्शन में ले जा सकती है ना? और आप भी क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये व्लॉगर्स पर कितनी देर हम बात कर लेंगे, है ना? चैनल वॉर्स में कुछ रखा नहीं है until and unless it's personal और अब लोग कहेंगे आप भी तो बोलती हो लेकिन वो बिलो द बेल्ट जाकर बोल रही है झूठ बोल रही है उसको तो मैं जवाब दूंगी है ना बिकॉज वो थोड़ा पर्सनली फील होता है तो अम, मैं फिर देखो मैं अगर कैमरा ऑन करके अगर मैं हाथ जोड़ूं ममता तो मेरी बात मानोगे अगर मैंने कैमरा ऑन किया तो आप तो डर जाओगे। एक तो यहाँ 2:30 बजने वाले हैं और मेरी शक्ल तो हैलोवीन से भी ज़्यादा खराब हो सकती है इस वक़्त। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे, पोलाइट रिक्वेस्ट करूँ कि अम, अब इससे ज़्यादा आगे बात मत बढ़ाओ, ठीक है? अगर प्लीज़ उससे बात कर सकते हो, कर लो। अगर अभी मन नहीं मान रहा तो छोड़ दो। कभी ना कभी मन मानेगा क्योंकि आप लोगों ने अच्छा वक़्त बिताया एक-दूसरे के साथ, है ना? और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि शांति आती है एंड मैंने आपके कमेंट में भी लिखा था that you two are peas in a pod, ठीक है? Like two hot-headed ladies together. तो ठीक है, हो गया। मैंने यही तो बोला था व्लॉगर पर बात मत करो अलग टॉपिक। चल वो कर लेगी ना। I mean, I can't speak for her, but eventually वो कर लेगी। माउंटेन गर्ल गए थे ना एक दिन उसके बाद मैंने वो भी सुना। अच्छी बात है। ये ओवरनाइट चेंजेस नहीं आते ममता, है ना? या कहो कि ओवरनाइट या तब इन कि इंसान बदल जाता है या हमारे टॉपिक बदल जाएँगे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन I look forward to the day that you return back to where you need to be. Okay? मतलब शुरुआत तो आपने अम, ब्लेस के साथ ही की थी ना और आपने देख लिया ना कितनी जल्दी लोग फिर आते हैं आपके पास। हमारी है ना बेटियों को गंदा ना किया होता, बोली ना लगाई होती, तो मैं तो नहीं भड़कना था इतना, लेकिन मैं भड़की हूँ और मैं भड़की ही रहूँगी। लेकिन आप समझ तो गए हो ना ममता कि क्यों मैं क्या कह रही हूँ आपको?
और मैं ओपनली कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कि बिहाइंड द सीन्स मैं कहूँ या मैं आपको कहूँ कि मुझे आपका इंस्टा दो, मैं आपसे बात करूँगी, नहीं मेरा हमेशा से सामने से ही होता है। चाहे जब मैं प्यार करती हूँ, सामने से करती हूँ, चाहे मेरी जंग होती है, वो भी सामने से होती है ना? तो मैं फिर कहूँगी और मैं बार-बार कहूँगी, अगर अभी बात दोनों ने और मैं आई डोंट नो ब्लेस मेबी लेटर सुन लेगी या फिर मैं उनके कमेंट में लिख दूँगी। उन्होंने एक्चुअली उस दिन हाँ, उन्होंने लाइव की थी और अच्छी बातें हो रही थी, है ना? और लेकिन मेरे लिए लेट था। लेकिन मुझे अच्छा लगा था वो वर्ज़न उनका। ये नहीं कि चलो आप तो दोस्त थे, सहेलियाँ थी, आपकी हो गई, आपने एक-दूसरे को कहना है, वो एक साइड पर रख दो। जो दूसरा कन्वर्सेशन चाहे वो आगे का था या पीछे का था, अच्छा लगा और मैंने उनको भी कहा कि ये वर्ज़न उनका अच्छा है। हाँ, आपने किया था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ ममता अम, अब एक स्टैंड पर रहो पुत्र। हाँ, और आपने बोला भी होगा मैं ये नहीं कह रही लेकिन अब भी तो वो ही बात हो रही है ना। अब वो कहाँ रुकती है। उ उ उस गंदगी का हिस्सा मत बनना। अब देखना कल आएगी, मुझ पर बोलेगी मैं आकर उसको फिर मैं धो दूँगी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी इज़ एन इडियट, द वुमन्स एन इडियट, शी इज़ एन इम्बेसिल। सोचती नहीं है बस बक, 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 बक। मतलब उसको तकलीफ कि ब्लेस लाइफ क्यों आई, उसको खुशी कि ममता और ब्लेस की झड़प हो गई है। जल्दी से जी फ़ायदा उठाओ, तब भी पैनल ओनर भी चुप रहती थी, मुझे बोलना पड़ता। ऐसे हो जाता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब धीरे-धीरे आप ही सीख जाओगे। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस ही है। सब में कई बारी पीछे से काम पड़ जाता है या कई बारी भले ही जैसे और मेरा मैं प्लस के इतने नहीं सुने पर मेरा नहीं ख्याल वो पीछे हटने वालों में से तो मुझे नहीं लगता अगेन आई डोंट नो लेकिन बल्लिका को तो मैं कह सकती हूँ सबको आगे कर देती थी। आप पता नहीं की करती सी। तो मैं एक ये इनका कमेंट ले लूँ। मैं फर्स्ट टाइम आया अच्छा ये भाई साहब हैं डिफेंड द ट्रूथ अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसलिए पूछा अगर बुरा लगा तो माज़रत और अल्लाह ने करे कि मैं इंडिया के खिलाफ बात अल्लाह ना करे कि मैं इंडिया के खिलाफ बात करूँ, मेरे भी बहुत दोस्त हैं इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, यही तो है ना, लोग पता क्या समझते हैं कि अम, एक बंदी को कह दिया जिसने गंद डाला है, तो हम तो मतलब कि मैं एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ दूँ, तो यहाँ के हैं हमारे ईस्टर्न यूरोपियन लोग, कई आए हैं, कई वायलेंट होते हैं, मगिंग्स करते हैं, तो हम अगर एक गंदा है, हम सबको गंदा नहीं बोलते, ठीक है? मैं तो आप मैं खुद कहती हूँ मेरी 3 दोस्त जो वाईटी पर नहीं हैं, ठीक है? अम, वो जितना प्यार मुझे करती हैं, I I can't quantify it, है ना? So ऐसा ही होता है। तो ममता पैनल पर आओगे? बिकॉज़ मेरा ख़्याल नहीं आपसे मेरी कभी भी वन टू वन बात हुई है, मतलब आपसे बात।
आंटी आप लोगों ने देखा मुझे कभी वो जाते हुए या सपोर्ट करते हुए अभी गलत टॉपिक रही थी, अभी पूरा देश परेशान है। हाँ, वो तो है। देखो, गलत टॉपिक ये नहीं कि ये टॉपिक गलत है या सही है। अब अ, अब मैं दोबारा आपका कमेंट पढ़ती हूँ। आंटी आप लोगों ने देखा मुझे कभी वहाँ जाते हुए या सपोर्ट करते हुए, अभी गलत टॉपिक ला रही थी, अभी पूरा देश परेशान है। देखो अम, नहीं सॉरी व्हेन आई सेड हाँ, वो तो है। नहीं, मैंने आपको नहीं कभी वहाँ देखा और मैं होप करती हूँ कि मैं आपको कभी वहाँ ना देखूँ क्योंकि वो तो समझ जाएगी, ठीक है? वो समझदार है और वो पढ़ी-लिखी भी है। वो समझ जाएगी कि अभी इट्स स्लाइटली सेंसिटिव लेकिन वो वो नहीं समझेगी। अम, वो जो आज खालिस्तान भी कर रही थी ना और इस मुद्दे को कोई और रुख दे रही थी और नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की। वो यार वो नहीं समझेगी, उसके चुंगल में ना फँसना, ठीक है? हाँ, प्यार दो। नो आंटी अब काम करने जा रहे हैं। मुझे लगता है आप थोड़ा-सा पीछे से सुन रहे हैं। नहीं ठीक है, आप भी काम करो लेकिन गौर करना मेरी बात पर, ठीक है? और मैं सच्ची कह रही हूँ ममता अम, मैंने आपको कमेंट्स में भी कहा था कि मत करना, ये ना हो कि वो अकेली पड़ जाए। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि अम, वो अकेली या तो वो अकेली पड़ जाएगी तो वो वीक पड़ जाएगी। No, I think she's quite a strong lady, a very headstrong. Yes, she's volatile, but um, I don't मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि जैसे आपको अब मोहरा बनाया जाएगा या आपका कंधा इस्तेमाल होगा उसको टारगेट करने के लिए, है ना? तो आपने भी नहीं यूज़ होना, ठीक है? मैं फिर कहूँगी अगर ब्लॉक किया है एक-दूजे को तो अनब्लॉक करो और बात करो। आज नहीं, कल नहीं, जब भी शांत हो जाओगे तो आपस में बात कर लो, ठीक है? ये बल्लू ने भी अपना सत्यानाश ऐसे ही किया था क्योंकि दूसरे दिन इसने ऋचा पर लाइव कर दी थी। की तो इसने मेरे पे भी थी एक बार लेकिन मैं तो चढ़ गई थी, है ना? तो दैट्स माय एडवाइस टू यू अम, तो आपका दिन बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से और अगर मैं घर पर हुई और आपकी लाइव हुई और मैं सुनूँगी ज़रूर, ठीक है? सो बिग हग्स टू यू दोस्तों में हो जाता है यार, होता है, फिर क्या हुआ? You should pick your battles carefully. तो डिफेंड द ट्रूथ जी, आपका भी थैंक यू आप कमेंट्स में आए और बड़ी इज़्ज़त से बात की आपने भी और अम, थैंक यू ममता। मैं अब 7 जने देख रहे हैं, हेलो हुलो कह दो, नहीं तो मैं बंद कर देना, मेरा 11% रह गया मेरी बैटरी। तो कोई ना कोई कि ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਆ ओह ममता सो स्वीट आपके लिए मेरी माँ जैसी फीलिंग है और रहेगी थैंक यू ममता थैंक यू और मैं भी याद रखूंगी कि आपने मान रखते हुए वो पोस्ट हटा दी थी सो अगेन थैंक यू सो मच है ना
हमने यूट्यूब पर रह के हमने लड़ना थोड़ी है हर एक से, स्पेशली ना अपने दोस्तों से। लड़ने के लिए और बस बहुत से लोग हैं। बैटरी टू लो। अच्छा, प्लग लाना पैना। नो। बिग हग्स, बिग जप्पी ममता, बिग जप्पी। नो, ये है जो ना, अगर कोई मुझे पूछे कि वाईटी से क्या पाया, क्या खोया? खोने से ज़्यादा पाया ही है, मैं यही कहूँगी। खोने से ज़्यादा ना पाया ही है। तो आप अपना काम करो, अच्छे से दिन आपका अच्छा-सा जाए। मेरे दिल और दिमाग पर तो कोई और ही परेशानी थी, तब मैं लाइव आई थी। तो वो तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया ना, क्या परेशानी है। लेकिन आज अ, फ्यूनरल में गई थी मैं, और होता है ना कि जब आप किसी भी ऐसे फ्यूनरल पर जाते हैं, तो अपना कोई न कोई अपनी अपनी ही यादें आती हैं। और मैंने देखा ना यहाँ, हे हेलो माय क्रोशे क्वीन, हेलो ज्योति, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अरे ज्योति, मैंने भी क्रोशे शुरू कर लिया, मैं भेजूँगी आपको पिक्चर। दोबारा शुरू किया है, 2-3 चीज़ें तो बना ली हैं, छोटी-छोटी बनाई हैं लेकिन बना ली हैं। आप बताओ, आप कैसी हो? आपके लिए गुड मॉर्निंग, मेरा तो गुड नाइट है। मेरे तो यहाँ 2:30 बजे हैं। मैंने 2 कोस्टर बनाए। मेरे एक सोट लैंप है काफ़ी बड़ी, तो वो मैंने नोटिस किया कि उसका जो सोट है ना, वो अम, डिज़ॉल्व हो रहा था और मेरी कबर्ड पर पड़ा था। तो फिर कोस्टर उतना बड़ा मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने क्रोशे कर लिया। मैं आपको दिखाऊँगी। I was really proud of myself when I crocheted it। और मैंने कर भी लिया विदिन 10-15 मिनट्स। उस दिन मुझे आपकी याद भी आई थी, और मेरी एक और बहुत प्यारी दोस्त है, मतलब जान तो भी प्यारी दोस्त, वो वाईटी पर नहीं होती। अम, उसकी भी मुझे बहुत याद आई थी। हाँ, तो हाँ, आपको भी मैंने बहुत दिनों बाद देखा। अच्छा लगता है जब आप सामने आते हो, और ममता भी हमारी प्यारी है। बस ममता, मैं मेरी एक बात मान लेना, एक और, चलो एक और, मैं थोड़ी ग्रीडी हो रही हूँ अब, ठीक है? अम, आप ना अम, प्रीति को ये पुत्तन-वुत्तन ना बोला करो प्लीज़। मैंने वो लाइव नहीं सुनी थी, लेकिन मैंने टाइटल पढ़ लिया था, फिर मैंने लाइव ही नहीं सुनी। थैंक यू ज्योति। मैंने अब पता क्या शुरू किया, क्योंकि जब मैंने घर मूव किया, तो मेरा पूरे का बिग सिस्टर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इज़्ज़त प्यार दिया, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी वेलकम। आप इज़्ज़त से आए, और जो भी आता है, पहले तो जो भी हमारे घर आएगा, है ना? ये तो हमारे दोनों के कल्चर में है कि जब घर कोई आता है, तो उनको इज़्ज़त ही देते हैं हम।
तो थैंक यू, आप भी बहुत इज़्ज़त से आपने बात की। ऐसे ही इफ आई गो बैक टू ब्लेस्ड, वो इतना भड़की हुई थी मुझ पर फिर वो बेचारी दुखी हुई एंड चलो मैं गई। उसने इज़्ज़त से ही बात की। उसने ये नहीं किया कि मुझे ऊपर ले लिया, फिर आपने ये कैसे किया, वो कैसे उसने कुछ नहीं किया। सो इससे पता चलता है दैट शी इज़ वेरी सेंसिटिव। हर एक गुस्से वाला बंदा वो नहीं होता जो हम समझ लेते हैं। हल हजे के एंड आई थिंक शी नोज़, मुझे इस बात पर कोई वो नहीं है कि वो गुस्सा करेगी या बुरा मनाएगी। वो ਮੇਰੀ ਮਿਜ਼ਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ कहते हैं, मेरी मिजां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ नहीं सी because sometimes I'm just like really really but in time you get to know people। मुझे ये नहीं कि मुझे नहीं गुस्सा आया था लेकिन मैं चुप हो जाती हूँ, चुप हो गई थी and that's what I tend to do unless it goes over and above and it gets too personal। जो मेरे कानों में पढ़ा नहीं या जो मेरे आँखों ने देखा नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो डिफेंड द ट्रुथ जी, आपका नाम क्या है? वैसे आपके चैनल का नाम बड़ा अच्छा है, डिफेंड द ट्रुथ एंड आई होप इन लाइफ um, you stay true to your channel's name because बात तो आ जाती है फिर इंटेग्रिटी पर, है ना? एंड वी शुड ऑल स्टैंड अप फॉर द ट्रुथ। चाहे जितना मर्ज़ी फिर अनकम्फर्टेबल हो वो ट्रूथ, वी शुड स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ। और आप कहाँ बेस्ड होते हैं? बिकॉज़ I've got a feeling that you're across the pond। चलो। हाँ, सो ज्योति मैं क्या कह रही थी? हाँ, सो व्हेन आई मूव्ड हाउस मुझे मेरा ओल्ड मेरे को I've got a dedicated crochet box है ना? वो भी निकल आया। तो उसमें तो क्या ही ऑड ऑड बॉल्स थे ना उनके। तो फिर मैंने वो शुरू कर लिया। अब ब्लैंकेट ही बनेगा अब बड़ा-सा, तो अच्छा होता है। तो मैं जा रही हूँ सून ऑन अ लॉन्ग फ्लाइट। तो मैं तो फ्लाइट पर मैंने टारगेट अपने आप को कर लिया है कि मैं फ्लाइट पर लेके जाऊँगी और फ्लाइट पर वो ख़त्म कर दूँगी ब्लैंकेट क्रोशे करना। Still 4 people listening। तो I don't think any of my friends from across the pond। Good morning। हाँ, रानी उठ खड़ी। पौने 3 हो गए, है ना? हाय मेरी भैन किन्नी अर्ली उठदी है यार। हाँ, मैं तो सुत्ती नहीं। I know, I know। Wrap up warm because it's still raining। It's still raining a lot, so wrap up warm ना सिर भी ढक ਲਈ। मैं ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ। You'll have to rewind a little bit and listen to the live। Covered off some key points. You can skip the beginning because obviously it was about Trump and Epstein and yeah, I've got this. I feel like punching Michael Wolff in the face, but I can't, Anna। Yeah, हाँ, part time, definitely। All right, Rani, have a good day. Have a good day। People like me should be ashamed of myself, really। It's 2:44 in the morning and I'm sat here talking
and a lady's got up and she's going to start working. This is the time she wakes up for work. And they criticise her. And then they wonder why I go for them. Yeah, and they did try and celebrate the fact that me and Ronnie, we had a bit of a punch up. But it never was a big punch up. And when you're friends and you know each other, you just go, fucking hell, she must have been having a bad day. And I was having a bad day. I know, my darling. I know. मैं भी ਹੁਣ मैं ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ so मन्नू चा मन्नू 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 मेरा मन्नू आ गया oh yeah I've been live for about an hour and a half hello 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 have you had your dinner big hugs to the kids I was just about to go I've done my spiel on Michael on I was gonna call him the Wolfster. I've done my spiel on Trump. I've done it on Epstein. I've touched on Andy Pandy and what sort of troubled me. So you've missed all that, my lovely. But I've got it off my chest. Not that it'll leave me. I'll still be concerned. So let me just say goodbye to Rani properly. Rani, good. I was going to say, yeah, it's good morning to you, my lovely. And I will sleep. And please, I hope you get the rest that you need. Later. Bye, my darling. Bye. Good. I'll keep saying good night, but it's good morning for Rani. Yeah. Yeah. What I was saying was my note is that I'm absolutely outraged that this is access journalism, right? So they have their sources and they're right on the inside of what's working. Why? Because they had access to Epstein. He's had a lot of access to Trump. And when I heard yesterday that, well, I was aware of the emails and I was aware of this and this, well, where's your responsibility towards the victims? Yeah, you've got to give that information out to the public, but surely you should be a little bit more responsible than you have been. So you're sat there and you're gloating that, yeah, you had this information and you knew this and you knew that. And yes, you've provided some of the evidence. But for God's sake, you sat on it along with a lot of other people and the girl took her own life. Whether she took her own life or whether there's something else involved in that. But then my other thought was that he's actually put his own neck on the line as well, because, you know, it's, oh, what a buffoonery. But yeah, you listen to it from the beginning. But what I do want to do is, you know, all this citizen journalism and this access journalism, I really want to have a conversation about it and how, you know, they use that as a guise to fill their pockets for later, because they either write books or they charge phenomenal fees to do these appearances on the non-mainstream media, which is all these, you know, freelance podcasting news channels and platforms. And they've made themselves millionaires, and I don't begrudge them that. What I do begrudge is a woman who was violated. Yeah, she took her life. And they've sat on all of this for a long time. And then you've got Ghislaine Maxwell, big up in Trump, right? I think it's only been, it's not been more than 8-9 weeks since that his district attorney, who was it? God, I can't even remember his name. He interviewed her and Trump was never involved and Trump was never in his house. And oh,
she did that to get herself out of a hellhole and have her put into a luxury detention unit where apparently she's got a little doggy there and she's got the best of the food and comfort, fully protected, looking for a pardon. And what do you know? This week it comes out, he was. So, yeah, sorry, it seems like I've come full loop because I'm ranting and I'm raving about it. Horrible world that we live in. Horrible. But, yeah. Oh, I'm glad you've come and said hello, Manu. And I hope you have a really good walk. Um, there's 8 people watching. Say hello, people, if you want to. Dalu, सुन रहे हैं ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਿਖ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੌਂਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਵਜਣ ਲੱਗੇ ਆ Was it Dave Arenberg? Long, wasn't it long? You know the DOC. He was basically Bumpy Trumpy's. I'm sure he was his lawyer. I can't even think of the name. Yeah, the district attorney. Yeah, yeah, it was. It is a sad state of affairs, but look, they've got that 14th signature and the files, or in whatever form they are, they will be released. So I think it's a downward spiral from here on in, and justice will prevail. A little too late for Virginia, but you know, I'm actually looking forward to the day that Andy Pandy sits in a correctional facility as well, because he's as complicit. So yeah, but it is yeah, there's a lot going round. Might be the wrong name. I'd have to go back and listen to the podcast or read the news, but it was the district attorney, Longe, I think, Dave something. Well, it was definitely one of those. But yeah, oh, I'm glad you've come and said hello. And I'm glad you popped in to Richaz as well to say hello. That was a really pleasant surprise, really pleasant. And so I'm going to bid you girls good night and good morning. So it's good morning for Mamta. Good morning to Jyoti. Good morning to Bupi, who's always first, and defend the truth. I don't know if it's good morning or if it's good evening or good night, but thank you for coming. RBI अच्छा लगा. तो चलो हम चलते हैं अब. हम भी सोएंगे. I'm going to feel a bit guilty actually going to sleep at a time when my friends got up for work, but yeah. So बल्लू मुझ पर जम के बात करना सुबह, क्योंकि मैं ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਭੌਂਕ ਸਕਦੇ ਆ. ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਠੀਕ ਆ? Justice takes so long, and typically we do say, you know, justice delayed is justice denied. But I think this time, maybe these delays, I mean, I do wonder why there were so many delays, and it has been extremely strategic. And in the process of their strategy, yeah, the girl went and took her life, or yeah. But I think it's all going to come on top. I think it's time for their just desserts, and I also think Trump's losing it.
But hey ho, we've got crap going on here as well. So hopefully Starmer won't be here for long. I see my old friend Yaxley has been to Poland, and again he's up to his old tricks. Yeah, I struggle to call him right when he's right, because I know fundamentally he's so right wing, but I'll have to do that during the day when I've got a British audience as well. Idiots together, giving it large in Benidorm, but chalo, it is what it is. With all of this, Manu, we're just going to have to roll with it, and we have literally no choice but to sit back and be spectators. But where we can make a difference, I think we should. Not in this, political landscape at the moment, but there's just little things I think in life that we can do that can make a difference. And I don't doubt for a minute that you don't. But yeah. So I'm going to sign off, and भल्लू बहन जी डेडिकेट कर देना लाइफ मुझको कल नू मन्नू नहीं कोई फर्क पैना मैं सच्ची घोड़े कुत्ते खोते सारा कुछ मैं तां बेच के सौंदी आ ना मैं सुनना ना मेरे सर च जूं रेंगनी आ बट तेनू टॉपिक मैं लिखिया हाँ हाँ मेरे ममता नु कह रही थी ब्लेसी दोस्ती वापस कर लो हाँ मैं तो जो मुझे सही लगेगा मैं तो वो कहूंगी और ब्लेस ने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था कि तूने बात का बतंगड़ बना दिया आई बड्डी खालिस्तान ते बोलने वाली and Baloo, another thing, you cannot stop anybody talking about politics of any country. So if I decide tomorrow or the day after, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, that I want to speak on Indian politics, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ that I can't, because I can. And then ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ Canadians sponsored the Khalistanis. Now, I could counter that with the fact that there was another country that actually sponsored the Khalistanis. Okay? But I'm not going to go there, because I think at the moment it's best for me to keep my mouth shut, because I'm going to no ਮੈਨੂੰ ਸਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਣੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ she agenda listen, I don't know what she's on, mate. There's no agenda. If she had an agenda, she would have been able to pull back a little bit and do the right thing and just find another trending topic and roll with that, rather than targeting and bullying people and try and building these armies. Is not going to work. And she made that fatal mistake of saying, and I can get these people, they will sit with me, and now, well, I'd like to see who's going to come and sit with her and then slag us off. It's not going to happen. She's just rolling. She's like Humpty Dumpty. She is. Well, I don't know if I haven't decided if she's Humpty Dumpty or Mr. Blobby yet, but anyway. हाँ पल्लू रोज याद करोगी the reason I keep it light and hilarious is because women like her have to be taken as entertainment. Blobby, blobby, blobby.
'Cause you can't take fools like that seriously unless she goes off track and then she starts spewing shit about, Canada sponsoring Khalistan, because she's one of those who, I mean, that's not just misinformation, that's disinformation. Not that she would know the difference, but hey ho. Yeah, she is. And that's the point that we're all going to have to get to, is that we're not going to take her seriously. And if Bless does come live, I will go and disgrace her with my presence, and I will probably say the same thing. So she's a laughing stock. Yeah, entertainment, entertainment, entertainment. That's all we've got to take it. Right, my lovely. Good night. It's 3 o'clock on the dot. I've rambled on for far too long, but thank you for joining. You always put a smile on my face, and Rani, and oh, I was about to sneeze. Sorry, I didn't. And Jyoti, and Mamta, and Defend the Truth, who didn't want to give her name, but hey ho, and Bobby, and anyone who was listening. Yeah, thank you for listening, including you, Baloo. Blobby, blobby, blobby. Bye, 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 bye. Humpty Dumpty sat on the wall. No, I can't. I've got to behave. Good night.